Okay, so we will continue with our discussion about the Jenkins. Okay, so I hope you have some idea, basic idea, like some people were not available in the previous session. Okay, so I will give you some brief what is Jenkins, why we are using the Jenkins in the industry, why it is so popular, what is the use case of Jenkins here. Okay, so Jenkins is a very popular tool. Okay, every company is demanding and they are asking for the Jenkins expert. Why? Because it's a very popular tool. Because we have a DevOps tool, multiple tool, like in the real case scenario we are using the 50 or 20 tools, DevOps tools on a daily basis, and we are doing the all the production deployment with the help of Jenkins. We call it a CI/CD pipeline, continuous integration, continuous deployment delivery. Okay, so in the Jenkins we are going to create the CI/CD pipeline with the help of Jenkins. Jenkins is responsible for creating the CI/CD pipeline. In CI/CD pipeline we will integrate the 15-20 DevOps tools. Okay, so it's a like integration tool. Okay, so we will integrate all the multiple tool like Maven, build tool, testing tool, deployment, and Ansible, Terraform. Okay, and deployment strategy like you're going to deploy over the Kubernetes. Okay, so these type of things and these type of tools will be integrated with the help of CI/CD tool, that is Jenkins. Okay, so it is a automation process. For an example, this is a code commit, this is a developers. Okay, developers are pushing their code into the GitHub. This is a GitHub, source code management. Git is a space where the developer are pushing their code. So once they write some code and they will push the code into the GitHub, then Jenkins will come into the picture. Okay, Jenkins will check out the code. It means it will pull the code and then it will build the code. Building the code means like in Windows we have a .exe file. Okay, same way for the Java application we will make the build the code in the .var, .jar, .ear. Okay, depends on, we will discuss later on that thing. So it will build the code and then it will test the code automatically. Whatever they have, unit test and multiple tests are there, so whatever they have wrote about the test cases, so it will testing the application, then it will deploy the application into the master branch. It will deploy to the lower branch. Okay, first of all it will deploy over the lower branch. This is a lower branch like develop branch. In some company like they call it as app build or integration, prep, UAT, fit, many other names. Okay, it depends on company to company, project to project, what they call it is name. Okay, so once the application is running over the lower environment, then they will manually push the code into the promote the code into the production branch. So it is automatically happen. There is no human intervention required. So once developer push their code into the GitHub, the build will automatically happening. Okay, no one will be there. So as per the DevOps person, like if any build is failure, build is not running, or if you face any issue, okay, so you need to troubleshoot the issue. Okay, so this is a responsibility of DevOps person. Okay, so this is a like basic idea why we are using the Jenkins here. It's a CI/CD tool. It's like if the application is building, it means it is building with any software like Maven. Okay, for building the application for the Java based application we use the Maven, or testing the application we have multiple softwares. Okay, and packages. Okay, and deploy lower branch, and then if it is working fine here, we will promote it to the production branch. Okay, so there are multiple ways to achieve this configuration. So this is called as automation. There is no person needed for deploying. This is a raw code. Okay, and it is executing and building, testing and deploying over the some environment. It may be AWS, it may be Azure, it may be GCP. It depends on the company what they are using in the cloud environment, if they are not using the on-prem. Okay, so guys, till now any doubt here, or are we good to go? Can someone please confirm me? सर मैं कुछ पूछना चाहूँगा सर, जैसे हम इसको जब क्लाउड पे करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट जो हो गया है
पर सर कंपनी में हम अपना तो ये क्लाउड यूज नहीं करेंगे, तो कंपनी हमें अपनी इंस्टेंसेस देगी, हम उस पर जेनकिंस करेंगे। तो वो मैं आज बात कर रहा था, तो वो टेराफॉर्म से द्वारा क्रिएट किया जाता है, राइट? हम्म। तो सर हम डायरेक्टली पहले टेराफॉर्म से वो क्रिएट करके फिर जैसे ऑफिस में यूज करते हैं जेनकिंस वैसे करें? मतलब कि सर जो मुझे बताया गया कि हम टेराफॉर्म्स में वो क्रिएट करते हैं लिंक, और फिर आपको लिंक देंगे और फिर आप जेनकिंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेराफॉर्म ऐसा हमें? में टेराफॉर्म में एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट में कोड लिखा हाँ होता है। वो कोड आप हाँ। प्ले ऐप टेराफॉर्म अप्लाई करोगे आप, और हाइफन ऐप और टीएमएल फाइल का नाम लिख दोगे तो वो अप्लाई वो हो सर मुझे जाएगा। मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस ओवरऑल फ्लो दिया, बताया कि वो टेराफॉर्म से। तो मैंने पूछा भाई जेनकिंस हमारे सिस्टम पे है? बोले नहीं नहीं, वो ऑफिस का सिस्टम से नहीं होता है, वो ऑफिस के सिस्टम से, वो आपको टेराफॉर्म से क्रिएट करके लिंक आएगा, फिर जेनकिंस में हम आपको पासवर्ड और वो देंगे, उससे आप लॉग इन करेंगे और फिर जेनकिंस आपका चालू होगा। और गिट से आप, तो सर हम जो गिट से जो हम रिपोजिटरी जो है, तो ऐसे ही हम नहीं करें सर, हमें क्लिप से जाके एक फाइल लेके और फिर वैसे जैसे ऑफिस में करते हैं वैसे ही नहीं करें, तो हमारे लिए बड़ा यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हम मतलब वैसे हमें ही थोड़ा। हाँ। हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अभी टेराफॉर्म की ओके हेल्प से ओके। नहीं करेंगे। टेराफॉर्म जब मैं पढ़ाऊँगा कुबरनेटीज़ के बाद, तो हम टेराफॉर्म के हाँ। थ्रू भी हम करेंगे। लेकिन ओके पहले ओके अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ जेनकिंस के बारे में। ओके, ओके। जब और सर टेराफॉर्म पे ये जो आएंगे। आपने गिट एक वैसे ही लीजिए सर, गिट हब से स्टार्ट करिए, तो जैसे हमने पूरा कोड वैसे डाउनलोड ही कर लिया। करेंगे हम। हम एक ओके जावा का एक एप्लीकेशन लेंगे, एक पाइथन की एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है? एक जावा एक पाइथन हो ओके। गया। इन दोनों के एप्लीकेशन को रियल लाइफ में कैसे ये प्रोडक्शन तक जाएगी, कैसे हम इसको प्रमोट करेंगे, और वो सारी सर चीज़ें हम ब्रांच, करेंगे। हम ये जो लोअर ब्रांच है ये हम गिट के समय ही बना लेंगे या ये बाद में बनती हैं दोनों ब्रांचेस? ये पहले बना लेंगे। गिट में बनाएंगे ना, गिट से हम ब्रांचेस हाँ बनाएंगे ना? हाँ। तो सर फिर वहां से फिर दोनों ब्रांचेस जो बनेंगी, जैसे गिट पे हमने कोड ले लिया, फिर उस ब्रांच हम करेंगे, फिर ऐड ऐड के बाद हम सर कमिट, और कमिट के बाद ब्रांच होगा ना सर? हाँ कमिट के बाद ना ब्रांच, गेट ब्रांच एंड द ब्रांच नेम, ये जो आपका लोअर टेस्ट जो भी देंगे, एंड देन वी इफ यू वांट टू चेक आउट, यू कैन चेक आउट टू दैट ब्रांच, राइट सर? करेक्ट। ऐसे ही होगा ना? फिर हाँ, हम कंटिन्यू, ठीक सर। पहले ब्रांच तो बनाएंगे, चलिए, फिर ब्रांच के बाद जिस ब्रांच फिर में आप कर रहे हो पहले यस लोअर ब्रांच में ऐड करोगे, कमिट करोगे, उसके बाद पुश या करोगे। ठीक है, जब वो पुश सब हो ब्रांच जाएगा। के बाद भी कमिट करते हैं क्या? ब्रांच बनने के बाद भी कमिट? हाँ, तभी तो उसमें मेन गिटअप में जाएगी वो। नहीं, जैसे हमने कमिट कर दिया, देन हमने फिर ब्रांच बनाया, और आपने ब्रांच बनने के बाद फिर कमिट। आपने लोकल में ब्रांच बनाई, अब उसको आप पुश ओके। करोगे, तब वो गिटहब में जाएगा। अगर गिटहब में अगर पहले से ब्रांच नहीं है तो, अगर पहले से है सो फार सो गुड, अगर नहीं है तो आपको पुश करना पड़ेगा। पुश करके वो वो जब हम सीधे वहाँ, करेंगे, ठीक। जब मैं उस हम्म, चीज़ पे आऊँगा तब उस चीज़ पे डिस्कस हम्म, करेंगे हम। ठीक ठीक ठीक। पहले मैं आपको नहीं बता ये दूं अभी जेनकिंस हम क्यों यूज़ कर रहे ओके, हैं। ठीक ठीक। अब ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं वो तो मुझे बहुत कम समझ में आया, लेकिन ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। यूज़ इसलिए करते हैं फॉर सी आई सी डी पाइपलाइन, फॉर क्रिएटिंग द पाइपलाइन। ओके। अब यहाँ पे हमें ये नहीं है कि हम पहले डेवलपर का वेट कर रहे हैं, वो बिल्ड करेंगे, फिर बिल्डिंग टीम होगी, फिर टेस्टिंग टीम होगी, फिर डिप्लॉयमेंट टीम होगी। वो सब टीम इलिप्स हो गई है, ख़त्म हो गई है। ओनली टेस्ट डेवॉप्स कौन पर्सन इज़ करेगा? देयर। हमारे एंड टेस्ट हाउ वी केसेस विल होते डिसाइड हैं। अबाउट द टूल्स? हु इज गोइंग टू डिसाइड द टूल्स? इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, लाइक विच टूल दे आर यूजिंग राइट नाउ। ओके, दे आर तो बट लॉट्स ऑफ हाउ टूल हाउ द अवेलेबल। लाइक हमें हम रोबोट फ्रेमवर्क पे टेस्ट करेंगे इसको, तो इज इट पॉसिबल दैट इट कैन बी टेस्टेड ऑन रोबोट फ्रेमवर्क? हाँ, उसको चेक कर लेंगे, उसका प्लगइन अगर अवेलेबल होगा मार्केट में था शायद था। अच्छा, ओके ओके, प्लगइन्स, ओके गॉट प्लगइन्स इट होते हैं इसमें, सर। प्लगइन देखना पड़ेगा ओह उस ओके कौन ओके सा प्लगइन उसका करेगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे सैकड़ों प्लगइन है, सैकड़ों, हज़ारों। ओके ओके ओके, अब नाउ हज़ारों गॉट इट, प्लगइन नाउ तो तुम याद नहीं करोगे ना, तुम वो नो नो देखोगे नो जो नो तुम्हें ज़रूरत नो की चीज़ें नो, होंगी। नाउ 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 अंडरस्टैंड, प्लीज सर कंटिन्यू, अभी समझ में आया थोड़ा, ठीक सर। ओके, सो लेट मी क्रिएट द मशीन, देन वी विल डिस्क कंटिन्यू फर्दर। 1 second guys. Maybe some other person from my team changed the password. Let me quickly get it.
Okay, it worked. Okay, so whoever was not present in the previous class, okay, so you can get to know, you can go through like very starting. Okay, so guys, please pay attention, whoever was not available in the previous session. Okay, this is going to be very fully practical. I will from basic to advanced cover all the things. So let me take any CC2 machine Jenkins here, and I will use a Amazon Linux. You can take as per your choice here. Okay, and use higher instance, higher requirement. T2 medium or T2 medium will be fine. Two virtual CPU there and 4 GB RAM is there. Okay, so it will, Jenkins is a heavy application, heavy software, so it will be working very smoothly over the T2 medium. Otherwise it may be lagging issues you will face. Okay, and key pair you can select here, like I have already created key pair Jenkins here, and here I will require only HTTP. I don't require HTTPS. SSH is required here for the remote connection. Okay, and 8 GB hard disk is sufficient for me. Plugin will not take much space here. Plugin guys in the Jenkins, because Jenkins is nothing but it is a combination of plugins. Without the plugin it is nothing. You cannot do anything in the Jenkins. Like plugin is a software. Okay, like you have a Windows machine. In Windows you want like do some painting, so you have a paint software. You want to do some editing, so you will download the Adobe Photoshop, right? You want typing, so you will download the software Microsoft Word, correct? So same way in Jenkins is as per your requirement, as per your choice. Well, like what's your requirement, you will download the software. So in Jenkins we call it as plugin. Plugin means software. Okay, it's a Java based software that is a plugin in Jenkins, nothing else. And also guys, if you have any question, confusion in between, so you can speak out and you can clear the doubt from me. Otherwise you will be facing the more and more issues once I will go complex. Now let me change the security group here, because Jenkins software, Jenkins package works over the 8080 port number. So I would require the port number 8080 for my Jenkins server. Okay, please make sure, like SSH is a soft protocol that works over 22 protocol. Okay, HTTP works over 80 protocol. So same way Jenkins will work over the listen over the 8080 port number. Now Jenkins will be working up and running fine. So as of now I have not downloaded here till now. I will connect here, then connect here. So now my machine is loading. Yeah, it's loaded. Okay, so first of all I don't have any Jenkins here with Jenkins. Okay, so you can see like no Jenkins software, no Jenkins package available till now. So what I'm going to do, I'm going to download the Jenkins software, Jenkins package, Jenkins installation, installing Jenkins. Okay, so now you need to go here, like if you want to go in Dockerize, Kubernetes, Mac OS, Linux, Windows, okay, where you want to download. So I will use the industry, 95% every industry is using the Linux and operating system for Jenkins. Okay, so I will use the Red Hat here because my Amazon Linux is based on similar to the Red Hat. Okay, CentOS, Red Hat. Okay, if you are using Ubuntu, then you will use this one. This is the installation steps. So I will use Red Hat. Nothing else, just copy from here and paste here. It will download the Jenkins from you, all the things in one go. You can see like it is installing the Jenkins here. Yes, I want to install. It's a very easy step, like just copy from here and paste here, nothing else. And make sure Jenkins is written in the Java language. Okay, so when you are running the Jenkins in your system, so make sure in your system you have Java installed there. So I will install Java here.
yum install java-y. Okay, let me check that Jenkins is working up running or not. Systemctl start Jenkins. I will start the Jenkins. It may take 1 or 2 minutes or 30-40 seconds because it's a heavy application. Jenkins is a heavy application. So I am starting the Jenkins software, Jenkins package. Okay, now what I will do, I will enable the Jenkins. Enable Jenkins. Okay, systems, it should be working. Let me take public IP and paste here port number 8080. Jenkins is working on the port number 8080. Yeah, now you can see this screen. This means your Jenkins is working on your machine on port number 8080. Now it is asking about the password here. So how to grab the password? Just copy this path. See guys, Jenkins are very smart. Like it will give you every command, what to do, how to do. Even your build is failing at any point of time. So it is a very basic things. Like it will give you the all the things what you need to do, what is happening there. It is a very smart, correct? So continue here. So guys, as I said you earlier, Jenkins is a collection of plugin. Without the plugin, Jenkins is nothing. It's a only base. Okay, so like in Windows you need to download the Paint, you need to download MS Office, you need to download calculator. Okay, more and more software and more and more functionality will be there. The same way Jenkins is like COS. Okay, you need to download the software to do multiple things the same way. But if you are new to Jenkins, if you don't know about what is Jenkins, how to work on Jenkins, so you can, if you are already aware like which plugin you require in your company, okay, your company is like using that plugin or not this plugin, okay, so it is a specific requirement, then you can use the this one. If you are new to the Jenkins, so you can use the suggested plugin. It will download automatically which is required here. Okay, like git is required. Okay, pipeline required. Okay, same way like in Windows, you know all the things. Like when you are going to any shop and you are asking like I want to format my system, so they will install the Microsoft MS Office, these kind of basic software they will download for you. So this is a basic software. Okay, so it is downloading for you. These are the plugins here. It depends on your requirement of your project, like which type of plugin they are using in your company. So we have a thousand plugin are available in Jenkins. It depends on your requirement. Every company is using different plugin, but git, like very common plugin like git is using in every company. If they are using the git, okay, maven is very popular. Okay, like if the java based application is there, so the maven will be there. So these are the very basic plugin here. So it is being downloaded. So once it is downloaded, Maven and Maven and Gradle are the both the same, doing the same thing, right? If somebody is using the Maven or wants it to use the depends Gradle, because depends on company to company. क्योंकि Gradle भी है और Ant भी है, because of the same thing, और OWASP भी है, तो मतलब इस जो आपको मतलब यूज़ काफी करना हो, जिसमें आपको अच्छा, जो आपकी कंपनी यूज़ कर रही हो वो आप यूज़ करोगे. ओके ओके. और अधिक हमें कुछ एड ऑन्स करना हो तो वो वो भी बता दीजिएगा, वो वो भी हम वो कैसे करेंगे. वो सब मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब ठीक. बताऊंगा मैं. अच्छा, ये आपने भी बताया था ना, ये अभी कंपनी आपकी कौन सी क्या यूज कर रही है, ये आंट हो गया और ये मेवन. क्रेडल. तो ये किस बेसिस पे रहते हैं?
ये इस बेसिस पे जज होता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है। जैसे आपकी जावा बेस एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए मेवन ही यूज़ होता है 99% केस। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 99% मार्केट लीडर जो होता है ना, जैसे आपका जेनकिंस हो गया, CI/CD टूल हो गया आपका, तो वो 95% जेनकिंस ही हर कंपनी यूज़ करेगी। गिट लैब एक्शंस है, ठीक है, सर्कल CIA है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हर कोई 95% केस जेनकिंस ही यूज़ करता है। तो सेम वे हेयर वी हैव अ लॉट्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल, प्लग इन आर अवेलेबल, बट 95% केस में आप मेवन ही यूज़ करोगे, ओके। विच इज़ वेरी पॉपुलर। ओके, थैंक यू। अब जैसे आपका टेराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, तो टेराफॉर्म के अलग फ़ायदे हैं कि टेराफॉर्म आप एजो के साथ यूज़ कर सकते हो, GCP के साथ यूज़ कर सकते हो, AWS के साथ यूज़ कर लो। तो डिपेंड करता है कंपनी आपकी कौन सी AWS फॉर्मेशन यूज़ कर रही है। अगर आपको एक में कमांड आपकी अच्छी है तो आप सब में काम कर लोगे। ओके, ठीक। Okay, so guy, this is the first step we have covered. Okay, we have downloaded the software, we have downloaded Jenkins. My Jenkins is up and running fine here. Welcome to Jenkins. Okay, so I have created the user admin. So okay, so let me restart so if you want to restart your Jenkins at any point of time, so just /restart. Okay, are you sure to want to restart the Jenkins? If you want to restart Jenkins, so that is the way here. Guys, please pay देयर इज attention. नॉट एनी अदर वे सर, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मतलब रीस्टार्ट वहां जाके यूआरएल पे ही लिखना पड़ेगा? बहुत सारे रास्ते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा मैं। ओके, एक वरना मैं रास्ता एक बार वो। में आपको सब बता दूंगा ना, इतना कंफ्यूज होगा, इतना कंफ्यूज होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा। ओके, सो दिस इज माय यूज़र नेम, ओके, एडमिन। इफ़ यू वांट टू लॉग आउट, सो वी हैव अ लॉग आउट ऑप्शन हियर। ओके, so this is a dashboard. I will go to a dashboard. Okay, so like I said you, like you can create the CI/CD pipeline in in the CI/CD tools. Like you can create the stages. This is the first stage, second stage, third stage, fourth stage, five stage. So we can have n number of stages there. Like this is the stage 1 checkout. It is checking out it is pulling the code from GitHub. This is the stage number 2. It is building the code. We have a raw code. Okay, so now it is building the code. This is the stage number 2. Now this is the stage number 3, testing. It is testing the executable builded application. Okay, it is testing. This is a stage number 3. And now this is a deploy over the lower environment or lower branch, test server. If here we are testing like our application is working as expected or not. Okay, this is a stage number 4, and this is a production. Once we are okay with the testing, so then we will promote it to the production. So this is a stage number 5. This is a live. Okay, so Jenkins will very smart. It will be doing all the things for you. He doesn't require you. He will require you as a DevOps person when it is failing, it is not working, Jenkins is not able to work, CPU utilization, memory utilization. Okay, there will be a number of issues will be there. So once you will be started working over Jenkins, so you will be seeing like what kind of issues will be having, so you need to troubleshoot the issue. As a DevOps person, you need to create the CI/CD pipeline, you need to maintain the CI/CD pipeline. So this is a responsibility of DevOps person. First of all, as a very initial state, so I will start new item here. So if you want to create the CI/CD pipeline, or if you want to create the job, what is job? Like this is the checkout. It means this is a job number 1, job number 2, job number 3, job number 4, job number 5. Job number 1 means it is checking out, pulling the code. Job number 2, building the code. Job number 3, testing the code. If you concrete all the jobs, it will make a CI/CD pipeline. Okay, so if you go here, new item. So first of all, we are very basic. Okay, so we don't know how to work on Jenkins. So this is a very initial state, freestyle project. We have a lots over there. We will discuss on one to one. Okay, so we will start with freestyle project.
So I will give any name like testing. Okay, I will create the freestyle project here. Okay, this is my first Jenkins job, correct? Discard old builds means, okay, let me create the first build, then you will be understand what is the build. You don't know what is the build. Okay, so here you are, if you want to integrate with the source code management Git, okay, the you have already downloaded the Git plugin, okay, recommended plugin, so it is already downloaded. If you want to pull the code from the GitHub, so you can give here repository URL and from which branch you want to get, like master branch or lower branch. Okay, I will not give here any name. First of all, I will do from very basic. Okay, this is a build digger, build environment, build step. Here execute shell, you can give any command here. Okay, for an example, echo this is my first Jenkins job by Anshul Goel. Okay, so I will create here temp name.txt. okay, so I hope you all knows what is going to do. It will create a file name.txt. In the name.txt we will be having this is my first Jenkins job created by Anshul Goel. Okay, so if I will apply, so what it will do, it will done this, it will do this. Okay, so I will save here. So if you build here, if you see here, it is builded. Okay, we have a success. If you want to check like it worked or not, how to check it? So go in the Jenkins, in which directory I got here, temp, right? In temp, sorry, cd ls name.txt. if you want to check it again, I am deleting all the files here. Okay, as of now I don't have any file here, correct? In this folder I will have again the, if I will again build now here, so what it will do, it will again execute this job. In this job what we have wrote here, so it will execute this command. So what is command is happening, this is my first Jenkins job created by Anshul Goel and it will create the name.txt. so this is all about this very basic job. If I will build again ls, okay, if you want to see the data of here, this is the first Jenkins job done by Anshul Goel. You can do anything, you can do anything in the Jenkins here. Till now, guys, do you have any confusion or question? Please speak out. सर मुझे नहीं, all clear. Okay, Komal, Tarusha, Anil and all. Clear. Yeah, it's clear. Okay, thank you for your confirmation. Clear answer. Okay, so this is the build. Okay, so this is my testing is a job, this is a job name. So what is doing, it is creating the file. Okay, so this is, if you can see, number 1, number 2, so this is the build number, so this is the build number 1, build number 2. Okay, so we will be having a n number of build, like if it is got failed due to some issue, technical issue, so as a DevOps person you need to tries the issue, you need to troubleshoot the issue. Okay, this is a responsibility of DevOps person. Okay, so I will go here and then I will go here again configure. If you want to do some changes in this testing job, so we have if you want to delete this project, delete this testing, so you can delete, rename, build now, it will build again. Okay, workspace,
every time you will be having any kind of things. Okay, so it will be storing into the workspace. Changes status. So configure here. So if you see, have like we have n number of option there. Okay, so let's take an example like discard old builds. It means it will discard the old builds. Okay, whatever we have previously in the, like we have build number 1, build number 2, it will discard the old builds. Okay, so you can go through and documentation this way, but it will discard the build only, nothing else. GitHub project, if you are going to if you are going to, like developer are there pushing, writing their code and they are pushing into the GitHub. So if your Jenkins job is pulling the code from GitHub, okay, this is a Jenkins. If this is pulling the code from GitHub, so you can take this one, GitHub project URL, correct? This project parameterized, like if you want to give any sub user variable, like uh, for an example I'm just creating here like choice parameter. We have a number of parameters, you can go through all the things. Okay, I will take a choice parameter here, like for an example name. Choices Rita, Sita, Shyam, Radha. Okay, so these are the names of the persons. Description, if you want to give any description here. Okay, so let's take an example of this one. Name, correct? So what it will do, name $name. What is name? It will take the name from here. Okay, so before building the pipeline, before building the job, you need to give, like you need to give the variable Rita, Sita, Shyam, Radha. Okay, so then it will take the name from that variable. Save here. If you see here, now we have option build with parameter, correct? So if you will build it, so you will be having the multiple options, Rita, Sita, Shyam, Radha. But in the environment, we will be having the name testing environment, app build environment, production, prep, UAT, app build, fit, and number of environment variable will be there. But just for your understanding, so we can, if I use this Shyam, build it. Okay, now this is my first job done by Shyam, correct? Build with parameter. Now I will use Sita here. Okay, build it now. So what it will happen here, Sita. Okay, you can give any number of variable here. So this is just an example, so you can give any configuration here. If you want to give here like another parameter, string parameter. Okay, so like city or like environment. Okay, default one is production. Remove this one. Okay, now I have taken the parameter, string parameter. So this is the way, like you can give define the variable here in your job. Like you will have a number of variables here, so you can define here description and environment here. Okay, so I will use here environment here, build with parameter. Okay, it will show you production by default. If you want to change anything like app build or lower environment, okay, let me take app build, low environment, build it. You can see here now app build, correct? This is my first job by app build. So this is the way to give the any environment variable here. So we will be having the multiple environment variables here. So let me give you a quick environment variables. So first of all, global variables, user defined variables. Okay,
global variables. Parameterized. Okay, these are the very important variables you can give here. And the fourth one is local variables. Okay, we can have in any Jenkins pipeline or CI/CD pipeline, so we can define the variables by these four methods. The first one is user defined variable. So user defined variable is nothing but parameters variable. You can define a number of variable like name is equal to Anshul, like previously I did. So this is a user defined. User is defining. Okay, then global variables. Global variables means like in your configuration Jenkins you will define the global variables. Okay, so it will be taking from the global. In we can have a number of project. Okay, testing, any other number of project there, so it will take from the global variable in your whole Jenkins software. So we can define the global. So but like user defined, this is limited to the any project here, like same way here. This is a configuration. Environment production, I have created here, but if I will create new project, another project, so this is only specific to this project, correct? If I will going to create any new project, okay, so it will not take information from previous project. So here we need to do again specify new and variables here for this project. But if you are using the global, so it means it will be whole for Jenkins software. Parameterize, you can give a string, boolean, or multiple, like there are a lot of examples there, you can go through it as per your requirement. Testing, configure, add parameter. Okay, multi-line, file parameter, credential parameter, choice parameter, boolean, password parameter. If you want to mention in your script password and you want to note, you don't want to showcase your password, like it is a very confidential, so here you can define password. Okay, it will not show in the script. You will just mention the password here, it will automatically take the password as per needed. Local variables means you can define the local variables, like for an example, name is equal to Anshul, and here you will use the name. So it is a local variable. Okay, it will take from here, it will give the value here. So this is local variables. So we can have four number of variables you can define here. So we will take, like we will move further, so I will take one and one practically, so that will be more clear for you. But now you can, as per the theory point of view, you can define, we have a four type of method you can define the variables. Okay, throttle builds means like if your requirement is like build is going to be, you in 1 hour you can build that 3 time project, like in testing, if I go testing here, so you can see 1 2 3 4 5 6 in 1 hour or 30 minutes I have built it 6 time builds, 6 time. Okay, so if you want to restrict it, like any user come here and they can trigger the build only for three times in 1 hour, so you can define any limit here, like you can build this project only for 3 times in 1 hour. Okay, so that is a throttle build. How to do that? Throttle builds, like number of build you want to do, as per now 60 minutes you can only build one build here. If you want to minutes, you can build only 1 minute, like 2, and I will take R. Okay, it means you can trigger the 2 time build in 1 hour. Okay, if that is your requirement, you can go ahead and you can set the limit for you.
Okay, developer can come into the build, and because you will not give any like developer people all the permission. As a DevOps person, you will be having the admin level privilege. Like I can do click here, I can create this one. You can configure the CI/CD pipeline. You will give some read only access to the developer peoples. Okay, so they can trigger the build from their self. So if you want to restrict, like you can build this project only like 2 times in a hour or 2 times in a day, so you can define throttle build here. सर ये हम डिफाइन थोड़ी ना कर देंगे, ये तो एडमिन डिसाइड करके देता होगा ना कि नंबर ऑफ बिल्ड्स आपसे 2 या 3, ये कैसे, मतलब व्हाट इज द, मतलब इसके लिए सेट, मतलब हम लिमिट कैसे सेट करेंगे, मतलब हाउ, ये आजकल तो ये एडमिन सेट करता होगा ये आप नंबर सेट ऑफ करोगे बिल्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट। लाइक प्रोजेक्ट की बिल्ड है आपकी प्रोडक्शन की, तो आप प्रोडक्शन पे आप हर दिन आप चेंजेस नहीं करोगे ना। आपको एक मतलब एक प्रोडक्शन विंडो निकाल दोगी सैटरडे में, जिस दिन ऑफ बिजनेस आवर्स होते हैं तभी हम कुछ प्रोडक्शन में छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्लाइंट को इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप नहीं तो प्रोडक्शन में सर, कुछ चेंजेस नहीं करते हो, हम्म, ठीक है। तो आप दिन में एक बार तो, चेंजेस करोगे। तो हम न दें तो भी चलेगा फिर, इसका मतलब जो हम ही को कंट्रोल है, अदरवाइज जैसे आप हैं, हम हैं, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो कोई और ना करे, इसलिए एडमिन करके देगा ना कि हाँ, भाई ये तुम इससे ज्यादा एडमिन मत करना। एडमिन आप ही होते हैं, डेवॉप्स सीनियर डेवॉप्स पर्सन होते हैं। अच्छा, तो हम आप ही रहेंगे अगर आप सब। जैसे फ्रेशर जा रहे हो तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ये आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, कोई सीनियर डेवॉप्स हम्म, पर्सन करेगा। वही यही मेरा पूछने का मतलब था। अच्छा सर, ये जो जो सीरीज आ रही है, ये जो नंबर 1 2 3 4, ये जो प्लीज आप, जो साइड में जो बिल्ड्स बने हुए हैं अभी, ये नहीं नहीं, एक नंबरिंग था ना जहाँ अपन जो बिल्ड्स देख रहे थे, हम्म। हाउ टू सी दैट टेस्टिंग, दिस वन। सर ये जो बिल्ड हिस्ट्री है, ये तो ये जैसे 420, जैसे #65, तो इनका क्या मतलब, ये जो हमने जो काम किया है वो पूरी उनकी रेप्लिका है कि व्हाट इज दिस, जैसे अभी #6 पे टिक किया ये हमने। हमने बिल्ड को ट्रिगर किया है, तो उसका बिल्ड नंबर आता हम्म, है, बिल्ड नंबर 1, बिल्ड नंबर 6 बार में ट्रिगर करा है इसी प्रोजेक्ट को बार बार, बिल्ड विद पैरामीटर करके। बिल्ड विद पैरामीटर्स। तो 6 बार ही ओके, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, 6 टाइम्स। ओके, ठीक सर। जितनी बार आप बिल्ड विद पैरामीटर करते रहोगे तो इसकी एक नई वो एक बिल्ड आईडी बनती रहेगी। या और जो भी आप करोगे तो उसकी एक बिल्ड आईडी बनती रहेगी, अगर नॉट आप विद बिल्ड बिल्ड कर विद रहे हो पैरामीटर, अगर और भी, आप हाँ, बिल्ड कर रहे हो तो बिल्ड कर रहे हैं तो ही होगा। हाँ, ओके, बिल्ड आईडी। ओके। इसमें एक ऑप्शन था ना, अगेन बिल्ड का भी ऑप्शन था ना, एक बार अगेन बिल्ड भी था इसमें एक ऑप्शन, लाइक कॉन्फ़िगर में, कि हम बिल्ड कॉन्फ़िगर में एक बिल्ड स्टेप्स था, बिल्ड इसमें सर हम आपने स्टार्टिंग में किया था कि बिल्ड हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बिल्ड जनरेट हो रही थी, यही स्टार्टिंग में था कि जब हम बिल्ड कर रहे थे तब, तो पूछने वाला था लेकिन वो चलो अभी ऑप्शन आएगा तो पूछना। ठीक ठीक। We have option of execute concurrent builds if necessary. Okay, so if you see here, if I do build with parameter, okay, let me remove this one, configure. I don't want parameterize as of now, and here I will give without any variables Anshul Goel. Save here. If I did 3 times here, okay, I did 3 times. So if it is a code is very lengthy, so it will take one by one. Okay. So once this build is completed, then it will execute this one. Then this will complete. Then other one will come into the picture. So this is the way it is happening. So I didn't do anything here. So it is not a very hell lengthy code. Okay. So if you सर want, यही मैं पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, जब बिल्ड नाउ किया हमने तो 3-4 बार दबाया, तो जो हमने 3 बार दबाया, 4 बार दबाया, ओके, तो वो क्या मतलब 4 बार बिल्ड बना। हाँ 4 बार, जितनी बार बिल्ड सर वो करोगे उतना बिल्ड बनेगा। कंटेंट क्या रहेगा, मतलब कंटेंट क्या कोड ओवरलैप होता है, कोड क्या कोड होता है, वही वही सेम टू ओवरराइट सेम, ओवरराइट। ओवरराइट, ओके ओके। If your requirement is like you want to build multiple builds at the same time, like you have a very lengthy code, okay, like in the Jenkins you are building only one build at one time. If you want to build multiple builds at the same time, like 3 builds, 4 builds, 5 build at the same time, so you can execute concurrent builds if necessary.
Okay, it never depends on like if I am building 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so what it will happen, it will execute one by one, 16, then 16 will finish, then 17 will finish, then 80 will finish, then 19. Okay, if you want to parallel execution, like all the build should be executed parallelly, parallel execution, then you will use the this one, execute concurrent build if necessary. It will parallel execution of all the builds. Okay, and if you want to pull the code from the GitHub, so we can have use the GitHub, pull the code here. Okay, so let me give any URL here, so it will fetch the code from GitHub here. So this is my repository, and let me take which one. Okay, Django, this one, code, copy from here, and then you will paste the GitHub URL from where you are pulling the code. Developer are pushing their code into this branch. Okay, and now it will ask about the from which branch. If you see here, I have a main branch. Okay, so I want pull the code from main branch. I don't have any master here, nothing else. Okay, so what it will do, it will fetch the code, it will pull the code, save here, build the code, it will clone the code. How to copy the code from GitHub? It is a cloning. So if you see, we have faced an issue, so you need to troubleshoot the issue. The error cloning remote repo origin. So why it is not able to, what is the issue here? No credential specified, recommended tool is none. If you see here, as a DevOps person, you need to troubleshoot the issue. If your Jenkins is built like same way I am doing here, you can get like some idea. So the recommended tool git tool is none. What does it mean? Anyone knows? What does it mean? This is an error. This is a hint for you. Why it is failed? Anyone knows why it is showing recommended git tool? Common sense, guys. बताओ, कोई आइडिया बताओ, क्या रीज़न हो सकता है? It means we are running the Jenkins server over the machine. In this machine, we don't have any git software here. Which git? No git. If you don't have any git, so how it will clone the code? First of all, you need to install the git, right? Yum install git. Then it can use the git software here, because we don't have any git, so how it will use the git clone? Okay, now we have a git here. Now it should work here right now. Build. It can git clone. Now you can see the build is going pass here. Build is successful. सर ब्रांच नहीं दिया तो चलेगा? नहीं, बिना ब्रांच के नहीं हो सकता ना. ब्रांच के नहीं होगा, लेकिन मास्टर है तो बाय डिफॉल्ट मास्टर नहीं ले लेगा. मास्टर नहीं तो है मेरे बाय डिफॉल्ट है. मेन ब्रांच है मेरे पास. तो बाय डिफॉल्ट कोई ब्रांच ये पिक नहीं करता है. अगर 3-4 ब्रांच हो तो एक पर मास्टर ले लेगा, मेन है. मतलब ये बाय एक ही ब्रांच है तो भी बाय डिफॉल्ट नहीं दिया. नहीं, अगर आपको ऐसे सिस्टम रखना है तो आपको उसके लिए शेल स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, वो आपको जाके उसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेता है. अल्टरनेटिव वे है उसका. So if you want to see where it is my code right now, because I have cloned, you can see, right? Git checkout and git, it had done all the things for you. Checkout. Okay, it have cloned the code. Okay, so this is the git init, it had done git init for you. So this is the location where your files cloned. Go here, sudo cd testing ls name.txt. Okay, so this सर ये क्या किया है? मतलब एक्सक्यूज मी सर, जैसे आपने गेट इनिशियलाइज का जो name.txt में है, इफ यू वांट टू चेक द कंटेंट्स तो cat name.txt करिए. ओके सर, ये तो, और वो जो हमने गिट जो उठाया, वो जो हमने अभी जो ये गिट ये जो ये उठाया, उसमें क्या कोड था सर?
इसके टेस्टिंग में जो जाते हैं, हम वर्क स्पेस में जाते हैं, ये आपके आगे टेस्टिंग के, हाँ, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया इसका वालेप जेनकिंस। इफ़ यू वांट टू सी दिस कंटेंट, sudo cd var lib jenkins and then ls. So it has not created the file for us right now. हाँ, क्योंकि हमने गिट से डाउनलोड किया वो वही कंटेंट हमें देखना है ना सर। हम्म। So let me give the shell here. So if you see here, we don't have any shell here. Bill false. Okay, we don't have any shell here. First of all, we need to correct it. Bin bash. So now the build is completed. Let's check. Okay, cd previously we don't have any this kind of things, right? Workspace testing, correct? ये जो हमने सर गिट हब जो जो आपने जो फाइल दी उसके अंदर जो चीजें थी, राइट सर, वो सारी उससे चीज़ें देखो बिल्ड यहाँ बना क्लोन ना, हो गई सारी उसी चीज़। से बिल्ड बनी ना। हाँ, पहले ही क्यों सर नहीं जब हुआ आपने था? हाँ जब पहले आपने वो जो अभी फाइल करी थी नेम डॉट टीएक्सटी तो वो एक अलग चीज हो गई, राइट। तो पूरा एक पोर्शन अलग होगा, और ये जो आपने जब गिट से किया तो ये जो अभी इससे बिल्ड, ये दूसरा बिल्ड बना। इनने बस क्या करा है कि इनने एक अपनी मतलब क्लोन कर लिया है। हम्म। यू सी अभी हियर, क्लोनिंग हुई है। बस हाँ इनने हाँ। क्लोन किया है। क्लोन क्यों किया इनने? बिकॉज वी हैव दिस इज द फाइल्स गिट क्लोन। हम्म। जैसे मैं कॉन्फ़िगर में गए इसके बिल्ड नंबर 24, ओके। सो इट हैज़ क्लोन द कोड। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस वन? ये लोकेशन पे गए गिट। वाल लिव जेनकिंस वर्क स्पेस, दिस इज लोकेशन। तो सर हम लोगों को जब भी करेंगे तो हम लोगों को ऐसे कैसे यही यही ये बाय डिफॉल्ट यही रहता है क्या, गेट रेव पार्स हाँ, रिजॉल्व ये गिट दिया यहाँ ये से। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहीं तक रहेगा, यहाँ तक। इसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन तो आपकी इट्स अ कॉमन लोकेशन। आफ्टर दिस लोकेशन इट विल डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट अभी नेम हो मेरा गया तो प्रोजेक्ट ये नेम क्या हम है? टेस्टिंग है। ओके। तो टेस्ट इट विल क्रिएट अ टेस्टिंग फोल्डर। इन द टेस्टिंग फोल्डर ये तो समझ में आया। it will contain all the things regarding to this project. सर अभी भी ये फिर इसने करेक्ट क्यों नहीं किया था, रिकमेंडेड गिट टूल इज नन, फिर से जैसे ये दिखा रहा है तो वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो तो हो गया, वो दिखा ही रहा है ऐसे। वो ने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई इशू नहीं आया है। ओके वो ओके। ने दिखाया नहीं, वो गिट तो ने मेंशन नहीं करा है, कोई बात सर नहीं। क्या क्या सर हम एक और गिट हब एक फाइल और करके एक और देखें, एक और चेक कर लें बिल्कुल। गिट गिट हब से। लेट मी टेक सैम्पल डेव एप्लीकेशन। जिसमें बहुत सारी फाइलें हों और दो तीन ब्रांचेस भी हों। ठीक है, ये एनसिबल सुना। अंशुल, जेनकिन डाउनलोड करने के टाइम पर ही आपने गिट भी डाउनलोड किया, फिर से गिट इंस्टॉल किया नहीं नहीं, एक ही बार किया बस मैंने जब गिट, बिल्ड बस डाउन एक बार। करने? जब इंस्टॉल प्लगइन्स में किया है ना इंस्टॉल, उसमें गिट भी था ना इंक्लूडेड? हाँ, वो हमने इंस्टॉल किया है प्लगइन जेनकिंस के अंदर, ठीक है, लेकिन आपकी मशीन के अंदर भी गिट होना चाहिए। ये तो आपने जेनकिंस में किया है, लेकिन आपकी इसके मशीन में भी तो गिट होना चाहिए। इंस्टेंस में EC2 मशीन में। EC2 मशीन वो जो आपने इंस्टॉल किया वो प्लगइन है जेनकिंस का, जिसके थ्रू वो, वो जिसकी सहायता से वो गिट से जेनकिंस बात करेगा। में गिट इंस्टॉल किया है? हाँ, जेनकिंस में गिट मैंने इसलिए इंस्टॉल किया है ताकि वो जेनकिंस गिट के थ्रू, गिट प्लगइन के थ्रू गिटअप से बात कर सके। उसको सपोर्ट कर सके, राइट ओके। सर। हाँ, तो मैंने एक, आई हैव तो टेकन आप द दिस वन कोड,
copy, and Ansible Sonar. This is a branch. एंसिबल सुना, ओके। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कॉन्फ़िगर। Save here. Build now. Build is done. Want to cross check. New files are came here. Ansible.yaml, whatever files we have here. Ansible.yaml, all the files is showing here. एक क्लोन आ गया, पूरा का पूरा ऐसे क्लोन पूरा आ गया मशीन में। 10 files are there, right? 10 files. And 10 files we are having here, correct? So this is how we can work over the Jenkins. Okay, so this is the very brief. So on tomorrow we will move forward on the some advanced topics. सर अभी बहुत कुछ क्लियर हो गया, थैंक यू। और सर इसका पासवर्ड भूल जाए तो कैसे रिकवर करेंगे जेनकिंस का? जेनकिंस के पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो रिकवर कर सकते हो आप इंस्टेंस के थ्रू भी। तो वो यहाँ से कैसे फॉरगेट बताएंगे? आज नहीं, मतलब कल बता दीजिएगा। हाँ, फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, बता दूंगा कल में, कोई नहीं। सर इसकी रिकॉर्डिंग थी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर आप मतलब कोशिश करिएगा आज ही भेज दीजिए तो हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, एनी अदर डाउट? नो अंशुल। सर टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे ना रिकॉर्डिंग, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे इसके हाँ, नोट्स हाँ, भी जो आप लिख रहे थे सर, वो 2-3 उसके क्लासेस के नोट्स पेंडिंग थे, उसी टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेज दीजिए। ठीक है ठीक है। नोट्स तो मैं कल भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देखता हूँ आज मैं भेजने की। हाँ हाँ 3 घंटे तो टेलीग्राम। रिकॉर्डिंग में लगते हैं यार, यूट्यूब में एक बार लगाओ तो 3 घंटे लेता है, 3 से 4 घंटे। देखता हूँ सर वो 3 कैसा घंटे। है ना, सवेरे तो फिर वो कुछ अभी थोड़ा टाइम रहता है, रात में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज कल तो फिर पूरा ऑफिस में पूरा दिन और फिर चलो मैं ट्राई करता हूँ, क्लास। देखो जल्दी अगर हो गई, क्योंकि 1.5 GB 2 GB की रिकॉर्डिंग बैठती है, 2 GB यूट्यूब लेता है 3 से 4 घंटे। यहाँ के रात के 12 से 1 बज जाएगा, तब जाके फिनिश होगा। मैं ट्राई करता हूँ, हो जाता है तो सही है। नहीं, कल सुबह भेज दीजिएगा सर। हाँ। ठीक है सर। सो गाइज, एनी अदर डाउट?